Hello students, here we are going to discuss the human respiratory system. We have already discussed the respiration in different animals and respiration in plants, and now we will discuss respiration in human beings. So, in human beings, as we know that we are highly developed multicellular organisms, we have a proper system for respiration, and this system is made up of many organs. It involves many organs which forms our system. The organs which are involved in our respiration are, they start from our mouth or nostrils. ये mouth और ये nostrils. Then this is for mouth, this is for nostril. Nostril से जब आप air in लेते हैं, breathe in करते हैं, तो ये कहाँ जाता है? Nasal chamber में. Nasal chamber opens into pharynx. Pharynx, which is the common opening of your mouth and your nose. Then pharynx open into larynx. Larynx is the voice box. Then larynx opens into the trachea. Trachea is also known as the windpipe. This trachea is supported with the C-shaped cartilaginous rings. जो हमारा ये ट्रैकिया होता है, वेंट पाइप होता है, यहाँ से इसमें सी शेप यानी हाफ सेमी सर्कल जैसे शेप के ऐसे ऐसे करके इसमें जो है वो कार्टिलेज जो सॉफ्ट बोन होती है, कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं. These rings prevent this trachea from being collapsed. जिससे कि जो इसमें एयर ना हो तो ये कोलैप्स नहीं हो जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए जो है these C-shaped rings are present. Then this trachea divides, it forms a Y-shaped structure. It divides into two bronchi. Singular is bronchus and plural is, because they are two, so we call them bronchi. Each bronchi enters in the two lungs. Lungs, they are bag-like structures which are highly muscular and very elastic. इतने इलास्टिक होते हैं कि इनमें एयर फिल आराम से हो जाए, ठीक है. और ये लंग्स जो हैं हमारे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, they are made up of very soft muscles and it is covered with a layer. Here you can see that there is a layer which covers the lungs. Now inside the lungs, these bronchi, they divide and redivide. Divide, redivide and redivide. It forms the branches of, it forms a structure which resembles the branches of trees. जैसे कि पेड़ की टहनियाँ होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, बेहिसाब एक में से एक निकली हुई होती हैं. इसी तरह से जो है ये जो ब्रोंकाई है ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं. प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, देन टर्शरी ब्रोंक्यूल्स आर देयर. और ब्रोंक्यूल्स के एंड्स पे, उनके बिल्कुल टर्मिनल एंडिंग्स पे देयर आर बंचेस ऑफ ग्रेप्स. बंचेस ऑफ ग्रेप्स ही प्रेजेंट होते हैं, उन जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. द एल्वियोलाई. Alveoli are the sacs which get filled with air and their membrane is very thin and they are highly supplied with the blood capillaries. और इस तरह से जो है exchange of gases आसानी से हो सकता है alveoli में. So alveoli are present in a sac, alveolar sac जिसे हम बोलते हैं. और इस sac के अंदर alveoli जो है they are arranged as bunches of grapes, ठीक है. तो जो एल्वियोलाई हैं हमारे दोनों लंग्स में लगभग मिलाकर 750 मिलियंस होते हैं. एक इंडिविजुअल में देयर आर नियर अबाउट 750 मिलियन ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट. सो एल्वियोलाई आर द एक्चुअल साइट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज. ओके, अब जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, दोनों लंग्स के अंदर डिवाइड हो गया. डिवाइड होके फाइनली इट हैज टू रीच टू एल्वियोलाई वेयर द ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट विद CO2. अब CO2 जो है उसमें ज़्यादा है कैपिलरीज में और एल्वियोलाई में CO2 कम है. एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है और CO2 कम है. तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज इन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड विल बी डिफ्यूज्ड आउट from the blood capillaries and again with the same passage. इसी पैसेज से alveoli से bronchioles, bronchioles से bronchi, bronchi से trachea, then larynx, then pharynx and then nasal chamber and then nostrils. जो आपका CO2 है वो बाहर हमारी बॉडी से चला जाएगा.
Got it? So this is all about the how the respiration occurs in the human being. Here I have written a kind of flow chart. Okay, your respiration occurs, it starts from nostril, nostril से nasal cavity, nasal cavity से pharynx, pharynx से larynx, larynx से trachea, then bronchi, then bronchioles, then lungs, and then alveoli. Now one more thing, here you can see that there is difference between the structure of the two lungs which I have drawn. This is right lung and this is left one. Right lung has three parts, okay, three divisions. और इसके जो होते हैं इसमें सिर्फ two divisions होते हैं. Plus you can see this gap. Actually this is a little bit smaller in size and this gap is left for the heart. क्योंकि यहाँ पर हार्ट सिचुएटेड होता है इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है. Okay, now I talked about the two layers or the protective layer which is present over the lungs. The name of this layer is pleura, and between this double membrane जो pleura है और lungs के inner membrane है इसके बीच में gap होता है. The gap is filled with a fluid that is known as pleural fluid. So this fluid helps in the frictionless movement of the lungs because lungs keep on moving for the whole day, whole night, for the whole life even. Once if they stop moving, that means we are dead. तो इनके जो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट है वो कंटिन्यूअस होता रहे इसके लिए जो प्लोरा है वो इसको प्रोटेक्ट करती है और इसके अंदर जो फ्लूइड है वो उसका फ्रिक्शनलेस मूवमेंट को कंटिन्यूअस रखता है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग in the next video.